Namaste ji, namaste. So a very frequent question for relating to any law entrance, especially DU or a 3-year law entrance, even for the AILET, even for CLAT new format, is what all or how much do you need to really know in polity, or what do you need to cover? I'll just break apart the constitution for you. 1 to 4 you need to do union and its territories. All right. Why? अभी JNK बना ना, JNK में क्या बना, यूनियन टेरिटरी बनी, तो यूनियन टेरिटरी किस आर्टिकल में बनाई जाती है, वो सारे प्रोविजंस आपने पढ़ने हैं. दे आर गिवन इन 1 to 4 and 1 and what does 1 say? Bharat, that is India, shall be state. Very frequent MCQ. Then you come to 5 to 11. अब सिटीजनशिप भी है हमारी, आजकल तो हॉट टॉपिक है सिटीजनशिप, एंड देन CAA, NRC वगैरह वगैरह. तो अंडर विच आर्टिकल इज द पार्लियामेंट empowered to make a law relating to citizenship? Once you read these, you're going to figure it all out. And let us say that you take citizenship of Canada. What happens to your citizenship here? All given here, right? Read and then try to remember as well. You want to go to 12 to 35, which are your fundamental rights. 12 stands for states. So for example, let us say that if you need to assess whether your preparation is on a good enough level, if I ask you under which article is abolition of untouchability given, and article 15 कितनी बार अमेंड हुआ है, कौन कौन सी बार अमेंडमेंट हुआ है, और 15 के अंदर क्या क्या है, और 19 के अंदर let us say I want to move freely throughout India, then 19 article 19 clause 1 clause सब क्लॉज विच इज देयर, एंड देन राइट टू प्रॉपर्टी कौन सा होता था इसी के अंदर, कहीं पे होता था या यहीं पे होता था या कहीं और होता था. डबल जेपडी, राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, right? So 19 to 35 is the most crucial thing if you're preparing for polity. Please do cover this from, well, any book or maybe from online course or wherever. If you're in a coaching academy, well, then ask your teacher to explain it to you again. Alright, 36 to 51 is your DPSPs. DPSPs कौन से कहाँ आए थे, अमेंडमेंट्स आपने ज़रूर कवर करनी है, कौन सी अमेंडमेंट कौन लेकर आया था. एंड देन DPSP हम उठा के कहाँ से लाए थे, अंडर फ्रॉम विच कंट्री डिड वी बॉर्डर फ्रॉम, USA, आइलैंड, स्पेन और रशिया. I'm sure you know the answer. Then we're going to cover to 51A, fundamental duties. तो आजकल जैसे 3-year law entrance में special trend है. Which one of the following is not a fundamental duty? So you obviously when you read these, you will get to know. And then which of the following is not a DPSP? Very connected questions. Alright, 52 to 62 आपने cover करना है. President साहब का क्या करना है? Oath, resignation, इनकी power क्या है? रेजिग्नेशन किसको एड्रेस करेंगे, इनको ओथ कौन दिलाएगा, एज लिमिट क्या है, इलेक्शन कैसे होगा, अंडर विच सिस्टम, इम्पीचमेंट या रिमूवल, इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, कौन से हाउस में वो बिल इंट्रोड्यूस होगा, सब आपने पढ़ना है. 62 to I think if I'm not mistaken almost 73 is your VP के अंदर सेम काम आपने दोबारा करना है. So for any post you'll have to do this. Then 74 से लेके almost आपके 78 तक आपके चलते हैं Council of Ministers and Attorney General. Again pleasure of the President पे है Attorney General कि नहीं, सब कुछ यहाँ से इन टॉपिक से पता चलेगा. तो जो मैं टॉपिक बोल रहा हूँ either you can cover from Lakshmikanth which is great and you can do it on your own, it's not necessary, or you can consider a course which is, the link is in the description. All of this that I'm trying to explain to you plus TOEIC plus IPC, that is bits and pieces, and contracts given in one course. I think you maximum nipta it in a maximum of 2 days if you set out a stretch. ये सब काम खत्म हो जाएगा. I've pointed out the MCQs, I've given you question sets, I've given you ratta tricks as well as to how to remember this all. Then we come to, if you don't want to do that, well, it's perfectly fine. Do it from a book, prepare on your own, which can be absolutely done. Don't let anybody tell you otherwise. And then Attorney General के बाद क्या आएगा? Attorney General के बाद हम शुरू हो जाते हैं हमारे पार्लियामेंट में. 79 से लेके almost I believe 123 तक हमारा पार्लियामेंट चलता है. लोकसभा, राज्यसभा, मनी बिल्स, स्पीकर भाई साहब, और प्रिविलेजेस सारे यहाँ पे आपने कवर करना है. स्पीकर किसको रेजिग्नेशन देगा, स्पीकर अगर जाएंगे तो क्या होगा. 124 से ऑलमोस्ट 147 आपने सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स रखने. सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स में क्या क्या है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स में रटने नहीं है, सारे आर्टिकल्स कोई रटने नहीं है, थोड़े नंबर्स ऑब्वियसली मालूम होने चाहिए, विच आई विल मे बी डिटेल आउट इन अ फर्दर वीडियो. ऑलराइट, सो सुप्रीम कोर्ट जज के जी एज क्या है, रिमूव कैसे करेंगे, और ओथ किससे लेते हैं, रेजिग्नेशन किसको देते हैं, और जजेस की प्रेजेंट
आई थिंक प्रेजेंट स्ट्रेंथ तो यहाँ पे नहीं, वो तो एक्ट में मेंशन होगी. देन 148 से लेके ऑलमोस्ट 151 तक CAG हैं. एंड इफ आई गेट लाइक वन और टू ऑफ दीज रॉन्ग देन वेल दैट इज पेरेंट क्यूरियम, सो सॉरी फॉर द मिस्टेक, बट एक दो ऊपर नीचे हो जाते हैं व्हेन यू आर लाइक ब्रॉडली स्पीकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन. तो कैग जी, अगेन कैग जी का रिमूवल प्रोसीजर क्या है, अपॉइंट कैसे होते हैं, ओथ कैसे होते हैं, बेसिकली ये चक्रव्यूह आपने बनाना है हर पोस्ट पे. देन यू कम टू 152. 152 में क्या क्या है, कैग के बाद क्या कौन आएंगे भैया जी हमारे, आई थिंक गवर्नर आएंगे. गवर्नर साहब आ गए. गवर्नर साहब के बाद आ गए आपके स्टेट मिनिस्टर्स. स्टेट मिनिस्टर्स प्लस कौन होता है यहाँ पे, एडवोकेट जनरल, राइट. एडवोकेट जनरल के बाद उसके बाद आप आ जाइएगा. अच्छा 163 से कितने आर्टिकल्स होते हैं, 163 से 167 होते हैं आई थिंक. देन 214 से आप आ जाइए ऑलमोस्ट 231, दैट इज हाई कोर्ट के आर्टिकल्स. ये आपने करने ही करने. अगेन इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट मार्क इस साल के लिए, फंडामेंटल ये मार्क, और these are like the most important things. Then you go to 239 to 241. This is relating to UT. This is low priority, but do understand Delhi is in the news. So by which amendment was Delhi declared as a union territory, and for which article relates to Delhi? So that is 239AA, राइट. एंड उसके बाद आप आ जाते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, जो आई थिंक आपको ले जाएंगे 245 से लेके रफली स्पीकिंग, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग. ये लेजिस्लेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कौन कौन से हैं, दीज आर बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर. बेसिकली सारी फेडरलिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशन की पड़ी हुई है वो यहाँ पे पड़ी हुई है. दिस रिलेट्स टू दी well the 7th schedule, but articles is again I think 245 to 245 to 255, and then 255 to 263. Yep, got to do 7th schedule. क्या होता है कि कब राज्यसभा ओवर रूल करा देती है पार्लियामेंट को, या एज एन स्टेट की पावर को, एंड द पार्लियामेंट कैन मेक अ लॉ इवन इफ द सब्जेक्ट इज इन अ स्टेट लिस्ट. ऑलराइट, तो अब ये भी सवाल आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज नॉट इन द स्टेट लिस्ट. अब कितना कितना याद रखेंगे, नहीं, वो क्वेश्चन से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऑलराइट, अच्छा अब क्या क्या आता है. देन 245 के बाद हम यहाँ पे पहुँच गए हैं. एंड देन 7 शेड्यूल हो गया है हमारा, यूनियन टेरिटरी हो गई है. देन व्हाट डू वी डू, फाइनेंस कमीशन 280. Finance Commission is 280, and I'll just check the camera whether this is like capturing. मैं इतने नीचे लिख रहा हूँ whether this is capturing or not. So just give me 1 second. Yeah, so apparently it was not capturing after High Court. So well, we'll just write यहाँ पे 239 से 241 आप जाएंगे. Union territories low priority. I apologize that you couldn't see this earlier. Then we come to the 7th schedule वाले articles, basically legislative relations, administrative relations, 245 से 255, and then till about 263 you want to cover. And under what scenarios can the parliament make a law for a state subject? Then you want to come to 280, which is the Finance Commission. You want to go to 310. Finance Commission again कितने साल के लिए होती है, चेयरमैन कौन होता है, कितने मेंबर होते हैं, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है. Alright, cover it from Lakshmikanth. 310 is Doctrine of Pleasure of President. Have to cover. 317 is the UPSC chairman वाली relating bits. And then 324 is the CEC, Election Commission, and Chief Election Commission is mentioned here. Then you go to 343 से 351 तक लेकर official language of the union, and then official language of the union के बाद 367 आप interpretation, 368 amendments, 370 well J&K amendments, and 367 is interpretation. पढ़ लीजिएगा किताब से, बहुत अच्छे से काम आएगा. देन 370 के बाद यूजुअली ज़्यादा कुछ नहीं बचता है. 393 से 395 देख लीजिएगा क्या, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड, रिपील्स क्या पे दी हुई हैं, एंड विच आर्टिकल्स केम इन फोर्स ऑन द 26th of November, एंड द रेस्ट विच ऑल दे केम, एंड दैट इज एज एन ऑन फोर्स ऑन द 26th of January. दैट्स गिवन अंडर 394. तो इनकी थोड़ी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए. एंड देन यू टॉप इट ऑफ विद द आइसिंग ऑफ amendments, important ones only. So important ones के अंदर 42nd is the most important, 44th. Then we come to
the first one, then you're going to go for about 99 से लेके 103 में क्या क्या हुआ सारी पता करके रखिएगा. 7th I think is important. Then we come to the 21st is important. Then you're going to go to 24th is important. 39th is important. 42nd 44th मैंने बता ही दिया आपको. 92nd is important. 93rd is important. These are like the basic amendments that you need to be covering. और इसी के साथ जब आप ये सब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी सारे केस लॉज मिल जाएंगे. काफ़ी सारे केस लॉज इस चैनल पे ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, कृपया करके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए. ये है पॉलिटी. Pretty much this can get you through on a reasonable, I think reasonable probable scale. That's what I call it. That sounds complicated, no? But it isn't. So when you have a basic idea of all of this, I think you'll be pretty much be easily able to crack the polity section. The link to the mock test is in the description. The link to the course is in the description. The link to books. You can cover this from Wiley's. You can cover this from Lakshmikanth. You can cover Lakshmikanth की नई edition भी आ गई. The link is also there. You can cover this from Universal. Anything that you like, but I have to cover. And I'm shooting this in February. So the examination को अब 2 से 3 महीने रह गए हैं. अगर आप वाकई में सीरियस हैं तो पॉलिटी निपटानी शुरू कर दीजिए. आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी because your final semesters are going to be there in May. Alright, take care, bye bye.